बच्चा बाटी आज आम कौन पढ़ा आज आम बायोडाइवर्सिटी आज आम बायोडाइवर्सिटी को आपको कंटिन्यू करवा ओके so let's see आम आज जेनेटिक कौन जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ा तो चलो जेनेटिक डाइवर्सिटी फंडामेंटली मीन्स genetic diversity माने कौन genetic diversity fundamentally means variations in the genetic material among individuals of an species. The genetic variations may be in terms of nucleotides, genes, genome and other genome or chromosome. This diversity rises through genetic recombination during sexual reproduction and mutation. It leads to natural selection and origin of species. So what does this mean? अच्छा मत कह तुम फैमिली रे इंडिविजुअल्स फैमिली रे केते केते डिफरेंट लोक अच्छा तुम इवन सिबलिंग्स डिफरेंट अच्छा ना नहीं हाँ ना सेम देखा समस्या डिफरेंट अच्छा तुमठू ना सेम देखा इवन तुम भाई तुम निजर भौणी का सेम सेम देखा तो दैट इज डाइवर्सिटी इन जीन्स कारण सेम जीन जेनेटिक कंपोनेंट तुम अच्छे ना तुम भाई भौणी मान सहित तो से जो जीन डाइवर्सिटी होता क्या जो हो प्रथमतः सेटा होची क्या जो न्यूक्लियोटाइड्स जेन्स जेनोम आउ क्रोमोसोम एथरे डाइवर्सिटी जो क्या जो होची न्यूक्लियोसाइड्स रे बा जीन रे जेनोम रे आउ क्रोमोसोम रे एटा होची कोठी क्रॉसिंग ओवर हमें पढ़ी देले माने अछि व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर सेटा बेडे मियोसिस वे मियोसिस रा लिप्टोटिन फेज रे कोन हुए इटा क्रोमोसोम एमती आसंदी ता पर को सिनेप्सिस सहित जोड़ी होंदी तापरे परस्पर रो क्रोमोसोम रो सेगमेंट गुडा को इंटरचेंज कर दियंती और ए फेनोमेना को हमें क्रॉसिंग ओवर कहू राइट तो डाइवर्सिटी जोटा ए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो क्रिएट होची हमें ताको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहू तो व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी the diversity that is created because of genetic recombination during sexual reproduction is called genetic diversity. So what is genetical diversity? Genetic diversity means the variety in the genetic material among individuals caused due to the genetic recombination during sexual reproduction and mutation. तो डेफिनेशन कौन हम यार बुझेगा केन लिखिबा
तो जोटा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो और म्यूटेशन जो हेची कौन हेची ना जीन्स रे क्रोमोसोम्स रे जेनोम रे न्यूक्लियोटाइड्स रे जो वेरिएशंस अछि अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स ताको हमें कहबा जेनेटिक डायवर्सिटी अंडरस्टूड ना नहीं तो हमें आपको जीवा पे नेक्स्ट चले जीवा स्पीसीज डायवर्सिटी ऑर्गेनाइजमल डायवर्सिटी है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो it refers to the number of species in a population in a given space and time माने केतेटा स्पीसीज अछि आमे पढ़ी से ऑलरेडी 9th क्लास रे सॉरी 10th 11th रे बायोडायवर्सिटी फर्स्ट चैप्टर रे पढ़ना थिले तो एटी से स्पीसीज कथा कहै कि गोटे पॉपुलेशन धर आमे एटी रहुछे एटी केते डिफरेंट स्पीसीज एग्जिस्ट करछन माने माछ कुकुड़ा तबे कोन कुकुर जहाँ भी देखुछ बिलेई मूसा लिजर्ड्स एवरीथिंग these are all what different species that are present in a particular population is called at a given space and time हमें कहबा organismal species diversity तो what define species diversity is the number of species in a population in a given space and time या को हम मेजर केमती करू species richness the number of species in a given area at a particular point of time गोटे क्वांटिटेटिव टर्म अछि तब कहनी स्पीसीज रिचनेस तो तुमको एमती पचारि परियो एग्जाम रे व्हाट इज स्पीसीज रिचनेस तब कह स्पीसीज रिचनेस इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ गिवन एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम गोटे पर्टिकुलर टाइम रे गोटे पर्टिकुलर गिवन एरिया रे केतेटा स्पीसीज अछंदी हम ताको स्पीसीज रिचनेस कहबा कोन कहबा स्पीसीज रिचनेस क्लियर हला तापर नेक्स्ट आसीबो स्पीसीज कंपोजिशन माने कोन लिस्ट ऑफ स्पीसीज केतेटा स्पीसीज टोटल अछि एरिया कथा कहूनी टाइम कथा कहूनी टोटल केते स्पीसीज एग्जिस्ट करछन रिलेटिव अबंडेंस माने रिलेटिव नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज माने यदि दीटा स्पीसीज को हम कंपेयर करछे को स्पीसीज रो केते ऑर्गेनिजम्स अछंदी तार रिलेटिव मेजरमेंट को हमें कहबा रिलेटिव अबंडेंस तब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज स्पेलिंग भूल लिखछि रिसोर्सेज ओ बेटा ओ रिसोर्सेज recognizes three types of species diversity केते प्रकार स्पीसीज डायवर्सिटी अछि गोटे हला डायवर्सिटी अल्फा गोटे हला अल्फा आ गोटे हला कोन आ गोटे हला गामा तो स्पीसीज डायवर्सिटी केते प्रकार एग्जिस्ट करछि अल्फा बीटा गामा अल्फा डायवर्सिटी माने कोन समे किसी प्रॉब्लम अछि बुझि परछ केते प्रकार डायवर्सिटी एग्जिस्ट करछि कोन कोन रिलेटिव एविडेंस कोन what is relative evidence species compound relative number of
individuals in different species. Species composition कौन? What do you mean by species composition? List of species. तापरे species richness कौन? प्रभास species richness कौन? Number of species in a given area at a particular time. At a given area particular time रे जो species केते डाइशन हटाला species richness. Species composition है केते टा total exist करछि. That total list of species is called species composition. Relative evidence कौन ना number of individuals of different species. Relative number of individuals in a species. How? International Union of Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN. IUCN of full form कौन? International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. कहूची तीन प्रकार स्पीसीज डाइवर्सिटी अछि अल्फा बीटा एंड गामा. अल्फा माने कौन ना स्पीसीज वेराइटी विदिन ए कम्युनिटी. गोटे कम्युनिटी भितरे स्पीसीज रे केते प्रकार स्पीसीज अछि ताको हमें स्पीसीज वेराइटी कहबा. याको हमें मेजर कर परिबा स्पीसीज रिचनेस माने एटा गोटे लोकल लेवल रो गोटे कम्युनिटी रे आ गोटे गिवन एरिया रे केतेटा स्पीसीज अछि ताको हमें अल्फा डाइवर्सिटी कहू. को लेवल रे कम्युनिटी लेवल रे को लेवल रे केतेटा स्पीसीज एग्जिस्ट करछि हमें ताको अल्फा स्पीसीज कण डाइवर्सिटी कहू. तापर आसीबो कण ना बीटा डाइवर्सिटी. द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज अमंग कम्युनिटीज माने दीटा कम्युनिटी कंपेयर होछि. ए कम्युनिटी रे केते प्रकार स्पीसीज अछि ए प्रकार ए कम्युनिटी केते प्रकार स्पीसीज अछि. धर दियो नुआगां सामंतरापुर भितरे नुआगां रे केते प्रकार स्पीसीज अछि सामंतरापुर केते प्रकार स्पीसीज अछि. ऑब्वियसली एका ही रहइबो. धर आमे यूएस नै जवा यूएस रा टोरंटो रो गोटे जगह अछि कनाडा रो टोरंटो रो गोटे जगह रे केते स्पीसीज अछि हमर सामंतरापुर बा नुआगां एरिया रे केते स्पीसीज अछि. एई जो कंपेयर करबा डाइवर्सिटी रे दैट इज बीटा कौन बे हां टोटल धरनो 10 टा माने पीडी 10 टा पीडी धरनो पीडी माने कौन तो कौन जनरेशन एटी जनरेशन कथा होनी एटी कह होची गोटे प्रेजेंट टाइम रे वर्तमान रो समय रे केते प्रकार ऑर्गेनिज्म केते प्रकार स्पीसीज एग्जिस्ट करछि. फूल पत्र गछ पत्र जहा भी तो धर आमे एठी कंटेंट देखिले कोडी देखिले गोटे फास्ट ऑफ ऑल गोटे कम्युनिटी भीतर देखिबा गोटे 8 गोटे किलोमीटर रेडियस नै जे एटा कम्युनिटी ए कम्युनिटी भीतर केते प्रकार स्पीसीज एग्जिस्ट करछि सेटा हला अल्फा डाइवर्सिटी. तापर तो दीटा कम्युनिटी कंपेयर करियो एठी गोटे नै जा आ गोटे नै जा धर दुबई रे मोर गोटे डाउट रहि जा ठीक आ गोटे नै जा कोडी दुबई रे भी केमति कि स्पीसीज रो उट उट सब रहते कैमल कैमल नहीं हां बस एग्जैक्टली तांकर ड्रेस के अलग सब अलग तो सेमान को आम कंपेयर कर एठी जो डाइवर्सिटी रहला बिटवीन कम्युनिटीज दैट इज कॉल्ड बीटा डाइवर्सिटी अमंग कम्युनिटीज. तापर लास्ट गामा माने ग्लोब रे टोटल ग्लोब रे केते प्रकार स्पीसीज अछि दुनिया सारा रे सेटा हला गामा डाइवर्सिटी. क्रोस ऑफ स्पीसीज केते मिलियन लोक अछन 1 बिलियन स्पीसीज माने कोन स्पीसीज माने नंबर स्पीसीज माने प्रकार रो तो धरन 100 नहीं नहीं 20 मिलियन थिला 20 मिलियन गोटे स्पीसीज नहीं 20 मिलियन टा स्पीसीज थिला एंड येट टू बी डिस्कवर्ड माने नॉन तो 25 मिलियन. तार सिर्फ इकोलॉजिकल लेवल that increase होची ever increasing continuously. Ecological diversity explains about the different types of ecosystems present in the biosphere. तो कितने प्रकार इकोसिस्टम अछि आमे एटा कोडी पढितले क्लास 7 रे पढितले ना
इकोसिस्टम ग्रीनलैंड इकोसिस्टम एवरग्रीन फॉरेस्ट पढ़ना थे तापर पढ़ते डेजर्ट इकोसिस्टम ना बस इकोसिस्टम लेवल रे इकोलॉजिकल लेवल रे केते प्रकार रा इकोलॉजी एग्जिस्ट करूची आ ताको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहबा community combination assemblance of interactive population in a space and time at a particular point of time is affected by the environment community composition definition first कहिছে कि different population जो निज सहित interact करछली space and time माने गोटे पर्टिकुलर ज्योग्राफी रे गोटे पर्टिकुलर टाइम रे से माने कहा द्वारा इन्फ्लुएंस होती ज्योग्राफी द्वारा एबे जदि वर्तमान आमे दुबई रे रहथांते कि डेजर्ट रे रहथांते आमे को ए कपड़ा पिनथांते कि आमे कपड़ा अलगा पिनथांते आमे जदि कनाडा रे रहथांते सेठी बहुत शीत आमे शीत वस्त्र पिनथांते आमर हैबिटेट आमर सब काम कि जीरो फाइट्स विषय जानछ कहलो जीरो फाइट्स माने कोन प्रभास जानछ जीरो फाइट्स माने हला कोन जो सब डेजर्ट रे रहउछंती स्पीसीज स्पीसीज को रहउछंती डेजर्ट रे जो प्लांट्स रहउछंती स्पीसीज तम प्लांट्स ताको जेरोफाइट्स कहै जाय सेमानक स्पेशल फीचर्स किछ थाय कि ताको लीफ टा मॉडिफाई हे जता स्पाइन को देखि ना जेरोफाइट्स तापर ताकर अधिक वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थाय फ्लेशी थाय ताकर स्टेम टा राइट तो ए बडा एडाप्शन हे जाना किंतु हमर ए बडा एडाप्शन हे जे अरे हे जे कि आम प्लांट्स एमती एडाप्शन हे जे आम प्लांट्स तो नॉर्मल ना नहीं नहीं नॉर्मल ना नहीं प्रज्ञा प्रज्ञा ମୁଁ କହିଲି ଆମ Yes, sir. ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ନର୍ମାଲ ନା ନାଇଁ ନର୍ମାଲ ନୁହଁ I sir. ନା ତମ ଯୋଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ରଖିଛ ଘରେ ସେ କିଛି ହାଇବ୍ରିଡ ଅଛି ହାଇବ୍ରିଡ ମାନେ କଣ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମାନେ ଯୋଉଟା କାଟ କାଟ ଦିଆ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ଜୋକ୍ ରେ କହୁଛି ନା ତା ଦେହରେ କିଛି ଅଛି କି ମାନେ ଛୁରୀ ଫୁରୀ ବାହାରୁଛି ଆରେ ଗଛ କିଛି ଆସୁଛି ତ ଗୋଡେଇକୁ ବାଡିବା ପାଇଁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇମାଜିନ୍ କରିହବ ଯେ ମୁଁ ସେ ଗଛଟା ତୋ ଛାଡ଼ି ଦେବି ତା ପ୍ରଭାସ ଦୌଡୁଥିବ ଗୋଟେ ଗଛ ନଥାଏ ଏମିତି ଫୁଲ ଭଳିଆ ଥିବ ପାଖକୁ ଗଲେ ଏମିତି କାମୁଡି ଦବ ଏ ଭାଇ ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ ରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା ଆସିକି ବଢିଆ ଦେଖାଯିବ ସାର୍ ନାଇଁ ପତଳା ହେଇକି ହଁ କଣ କହୁଛୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଗଛ ନଥାଏ ତା ଦେହରେ ଫୁଲ ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କାମୁଡି ଦବ ହଁ ତାକୁ କହନ୍ତି କଣ କହିଲ କଣ पिक्चर प्लांट बोलते ना देखिए भेनस प्लांट एग्जैक्टली सर आ गोटे नहीं नଥାଏ जोटा कि रॉटन फ्लेश वाला स्मेल एडा ना एडा रॉटन फ्लेश ଏଇଟା सीए या କଥା କହୁଛି ହଁ ଏଇଟା ଇନସେକ୍ଟ कार्निवोरस डायोफिस तो एମାନଙ୍କର ଆଡପ୍ସନ ଏଇଟା କଣଟା କଣ ଆଉ ଛାଡ଼ ବୁଝେନା ତ କମ୍ୟୁନିଟି ଲେଭେଲରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା directly influenced by the community environment. The change in the ambient environment induces a change in the ecosystem composition and its functioning. The environment change हेले कौन हम ecosystem composition change हो जाए आ या कोई हमें कहो community diversity. Clear है concept? माने एनवायरनमेंट ऊपर जो डिपेंडेंट अछि जितक पॉपुलेशंस अछंती समस्त एनवायरनमेंट ऊपर डिपेंडेंट तो जदि एनवायरनमेंट चेंज होला टोटल इकोसिस्टम रो कंपोजिशन भी चेंज हो जिवो फंक्शनिंग भी चेंज हो जिवो नहीं इन ए पोस्ट और एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड इन ए पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड के देखि छ कल के जमी पानी नहीं ये नहीं से नहीं तो से भलिया दुनिया रे लोक माने अधा तो के एग्जिस्ट करना मतलब कल के बन लागे नहीं कल की फिल्म में देखी नो मोस्ट ऑफ द पीपल आर
कौन डेड ना बहुत कम लोग सर्वाइव करछथि सर्वाइवर्स हां सेया तो कहछि पानी नाही किछ नहीं बचले के बाली के सेटा तो कल्की बार को बचि मु के जानली भाई तो मु कोन कहछि बुझ तो सेई बेला किछटा स्पीसीज सर्वाइव कले तो कौन हैला एनवायरनमेंट चेंज हैला एनवायरनमेंट चेंज जो कौन हैला कंपोजिशन चेंज हैला ता फंक्शन भी चेंज हैला that is community diversity. Next, pattern of biodiversity. Biodiversity is not evenly distributed throughout the world. Biodiversity ta दुनिया सारा evenly distributed नहीं. Some region are very rich in diversity, some are poor. किसी बहुत rich और किसी poor. माने कोडी नहीं biodiversity कोडी अच्छी. Several geographic and climatic factors are responsible for this uneven distribution of diversity. बहुत गुडे geographical factor responsible कहाँ पे ये uneven diversity पे. Both latitude and altitude are two important geographic factors. Latitude and altitude माने height. Latitude माने height नो. Latitude माने हला location, geographical location. आओ altitude माने हला height. है height are कौन responsible. Both climatic condition as well as species distribution. Height और latitude इटा कौन influence करछि climatic condition इफेक्ट करछि ना नहीं geographic इफेक्ट करछि ना नहीं जहाँ latitude इक्वेटर पाखरे से गरम होबो ताको हमें को ट्रॉपिकल क्लाइमेट जे टिके आउट एट दूर को जीवा ताको कहबा हमें सब ट्रॉपिकल जे टिके आउट दूर को जीवा हम ताको कहबा फ्रिजिड बा सब पोलर ताको पोलर चारटा तो था ना ट्रॉपिकल सब पोलर regions. The most fertile गोटा tropical and subtropical. Same the height, altitude माने कौन height with the sea level. अच्छा हमें एबे coast रे अच्छे coastal region रे अच्छे right किंतु हम यदि केउंझर पळेबो ओडिसा भितर अछि latitude भी पाखा पाखी किंतु सेठी बहुत शीत तमे यदि कोरापुट पळेबो सेठी बहुत शीत तमे यदि कलाहांडी पळेबो समर्स रे सेठी बहुत गरम. तो geographical जो latitude and altitude ए दिटा x y भाबी दियो ए दिटा x y कहा को इफेक्ट करूची ज्योग्राफी आउ स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन माने को स्पीसीज रहिबे सेटा ताको अफेक्ट करिवो आ ज्योग्राफी को अफेक्ट करिवो किए लॉन्ग लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड लैटिट्यूड एंड कोन माने इक्वेटर रु केते बाट रे अछि आ केते हाइट रे अछि सेटा ज्योग्राफिकली डिटेक्ट करिवो नाही माउंटेन्स अछि कि लेक्स अछि कि रिवर्स अछि कि फॉरेस्ट अछि ताको डिटेक्ट करिवो एवं सेठी कोन स्पीसीज को प्रकार ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करछंती डिफरेंट टाइप्स रो ताको भी डिटरमाइन करिवो. कांसेप्ट क्लियर हला तो इंपोर्टेंट कोन several geographic climatic factors मतलब altitude and longitude both climatic conditions and species ए दिटा geographic factor species और climatic condition दिटा को affect करे बुझे. Scientists have observed that species diversity decreases as one moves from equator to the pole. जोरा मु कहली species diversity कम हो कमी जीवो अधिक स्पीसीज अच्छा इक्वेटर पाखापाखि किंतु तमे पोल आड़ी के जीवा कमी जीवो स्पीसीज डाइवर्सिटी. देन इज नो डाउट दैट द ट्रॉपिक जोरा बुझेली ट्रॉपिकल रीजन लैटिट्यूड रेंजेस फ्रॉम एतिके एग्जाम रे पढिबो शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू latitude 23.5 degree north to 23.5 degree south are very rich in species diversity. This pattern can be seen in terrestrial, marine and freshwater. माने एटा खाली टेरेस्ट्रियल जगह रे नै मैराइन रे भी बहुत रिच बहुत स्पीसीज अछि इवन फ्रेश वाटर बा रिवर सेठी भी बहुत बड़ा स्पीसीज एग्जिस्ट करै छै. The gradient is steep in the northern hemisphere and less in the southern hemisphere. Microorganism गुडा के स्पीसीज रे जिबे हां जेते हमें ऊपर को जिबा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रे ग्रेडिएंट बहुत स्टीप अछि स्टीप माने चेंज बहुत अधिक होछि ता माने कोन संगे स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन कमी हो जाउछि माने स्टीप ए बेला अछि बुझि परछ तो ट्रॉपिक्स रे सबुड अधिक ता तळ को सब ट्रॉपिकल ता तळ को सब पोलर ता पोलर के पूरा कम
मिनिमम ए ग्रेडियंट एमती अच्छे पूरा स्टीप अच्छे कोठी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आउ साउदर्न हेमिस्फीयर टिके कम अच्छे तापर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट are amazing in the sense that they contain 70% of species of the world माने जो रेन फॉरेस्ट रोची ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से 70% स्पीसीज आछी दुनिया एंड 7% ऑफ अर्थ लैंड सरफेस 7% भाबो एते प्रकार अछंदी रेन फॉरेस्ट एंड अमेजन रेन फॉरेस्ट से सब बेले वर्षा हुए थ्रू आउट द ईयर सेतन को रेन फॉरेस्ट कह जाए आ सेटा पाख कोटू इक्वेटर बुझेला तो मेनी ऑफ द वर्षा हुए इक्वेटर पाख ट्रॉपिकल रीजन है मेनी ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया सो हाई लेवल ऑफ एंडीमिज्म द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट have drawn worldwide attention because they have their high biodiversity and rapid destruction of habitat तो कौन ये जो रेन फॉरेस्ट है दुनिया सारा अटेंशन नहीं कहीं कारण हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होची हम रोड पर कंस्ट्रक्शन करछे आ सेठी बहुत अधिक बायोडायवर्सिटी अछि अच्छा एल डोराडो के जानि छ एल डोराडो विषय एल डोराडो कोन कहलो सिटी ऑफ गोल्ड मुझे भल लगे एक्सप्लेन करी फील नहीं कोई तो मोर कहले सीधा सिटी ऑफ गोल्ड सुंदर नगरी एल डोराडो सेटा कुआ जाउथिला ए रीजन में अछि अमेजन रेन फॉरेस्ट भीतर एल डोराडो साउथ अमेरिका रे अछि हां माने सेटा पूरा क्लोज ही अछि ना ना माने सेटा एक्चुअली के जानि ना दिया सेटा पूरा सेंटर रे अछि जाउ एल डोराडो एक पर्यंत के डिस्कस ऐसा अमेजन रेन फॉरेस्ट रे बहुत प्रकार डाइवर्सिटी अछि बिजनेस डाइवर्सिटी हाउ सदी मतलब एक अमेजन रेन फॉरेस्ट में हमें जब जीव को पर के अटैक केते हां अलग जातिर लोक भी रहନ୍ତି सेठी ସେମାନେ ସବୁଠୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସବୁଠୁ ଆଟାକ୍ ହବ ଖୋଲିଦେବେ the factors making tropical rainforest rich in biodiversity କାହିଁକି सेटा tropical rainforest एते biodiversity rich अछि कुछ एग्जाम में एटा क्वेश्चन पड़िबो why the tropical rainforests are very rich in biodiversity काहिଁकी अछनी रीजन हैला tropical latitudes have remained undisturbed for millions of years tropical latitude को केही भी millions of years ला डिस्टर्ब करना है tropical environments are relatively constant tropical environment वर्षा सारा कोन constant जहा जगु स्पेसिएशन होची आउ डाइवर्सिटी बढ़ुची हाई प्रोडक्टिविटी लीडिंग टू ग्रेटर डाइवर्सिटी बहुत गुड प्रोडक्टिविटी कारण जेहे टेंपरेचर कांस्टेंट अछि रेनफॉल टाइम रे होची तो प्रोडक्टिविटी अधिक अछि इट इज आल्सो फाइंड दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस विथ एरिया how it peaks in area with intermediate productivity or intermediate rates of disturbance. The more variable in the habitat, the greater the species diversity within it. तो कौन एरिया रिलेटेड स्पीसीज एरिया सहित जड़ित है बुझे तो हाँ एतिक था आज आम काली सकाळे क्लास करा सकाळे माने दीपरे मोस्टली 3:30 3:34 बड़े ठीक है चल arigato